there is an interaction going on between G, GW and GN. G, GW and GN, as you can see, is shown parallel to the time or y-axis, and the actual growth rate, which you can see over here, is actually shown underneath Gn. So this diagram is basically when Gn is actually greater than G. Then in that case, what happens is when the natural growth rate is greater than G. But for that, I think we should first study what is the natural growth rate before getting into that. So I think we studied warranted, but नेचुरल ग्रोथ रेट पार्ट रह गया है आपका. सो नेचुरल ग्रोथ रेट की डेफिनेशन पहले लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू हैरेट, फिर इसको देखते हैं. सो नेचुरल ग्रोथ रेट अकॉर्डिंग टू हैरेट natural growth rate according to Harrod is the rate required to maintain full employment. Is the rate required to maintain full employment. If the labor force grows at 2% per year, if the labor force grows at 2% per year, if the labor force grows at 2% per year, then to maintain full employment, the economy's annual growth rate must be, then to maintain full employment, the economy's growth rate, the economy's, to maintain full employment, the economy's annual growth rate must be 2%. It must be 2%. यहीं पे एक चीज और ऐड करिएगा. इन अ सोलो ग्रोथ मॉडल, in a solo growth model, which you will read after this, in a solo growth model, the reference to the natural growth rate talks about the growth rate of national income, talks about the growth rate of national income, which would just maintain a constant unemployment rate, which would just maintain a constant unemployment rate. If there is no technical progress, if there is no technical progress, if there is no technical progress, and the labor force grows at rate G, then this will be natural growth rate. And if there is a technical progress, and if there is technical progress, at the rate P, at the rate P, the natural growth rate is given by N is equal to G plus P. The natural growth rate is given by N is equal to G plus P. The main difference between Solow and Harrod model,
the main difference between Solow and Harrod model is in a Solow growth model, the actual growth rate converges on the natural rate. In a Solow growth model, the actual rate converges on the natural rate. Whatever the ratio of saving to income is, whatever the ratio of saving to income, whatever the ratio of saving to income. So as you can see, इसका डायग्राम भी जब सोलो का बनाते हैं तो उसमें नेचुरल ग्रोथ रेट से कन्वर्ज करती है एक्चुअल ग्रोथ रेट. लेकिन इन अ Harrod-Domer model, if the warranted growth rate is above the natural rate, if the warranted growth rate is above the natural rate, if the warranted growth rate is above the natural rate, the economy will expand until it reaches full employment. The economy will expand until it reaches its full employment. At this point, growth of actual output, at this point, growth of actual output must fall below the warranted rate. At this point, at this point, growth of actual output must fall below the warranted rate. Must fall below the warranted rate. Comma, and there will be a recession. And there will be a recession. So actual growth rate falls if G is less than GW. So लिख लीजिए is equal to recession. If the warranted growth rate falls below the natural rate, if the warranted growth rate falls below natural rate, then there will be a tendency, to ever increasing, then there will be a tendency to ever increasing, then there will be a tendency to ever increasing unemployment. This is what these research diagrams will explain. Can I have a next slide? In case of the next slide, you will understand what we were talking about. I hope everybody has drawn the previous diagram. आप लोगों ने बनाया है अपनी कॉपीज में? नहीं बनाया तो बना लीजिए. दीक्षा पीछे एक स्लाइड कर दो. इसको बना लीजिए अपनी कॉपी में, तब इसका एक्सप्लेनेशन लिखिएगा. द डायग्राम स्लाइड. द डायग्राम स्लाइड में जो आपका GN इज एक्चुअली ग्रेटर देन G, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ये पहले इसको बना लीजिए. There is a time on OX axis and then there is a growth rate on OY axis. तो टाइम से उन्होंने कहा है कि ये जितना ये जो आप लिनियरिटी देख रहे हैं ये बेसिकली टाइम की वजह से है. Another thing which you can note in this diagram is that GN may or may not be equal to GW. So in this diagram,
first point which you can note is GN may or may not be equal to GW. So there is no necessity. The relationship between GN and GW is very simple. GN may or may not be equal to GW. But it is actually a GN's relation with G that will decide everything. In case G happens to be equal to GW, then the condition of steady growth with equal employment would be satisfied. So आपको एक knife edge balance चाहिए. This is what knife edge balance is all about. In this case, when Gn is greater than G, this is not a knife edge balance situation. The knife edge balance situation is when G is equal to GW, which is equal to Gn. इस balance को maintain करना होता है economy को. That is why hence the term knife edge balance. So what they are trying to say is कि इस diagram में Gn may or may not be equal to GW and all that. Such a possibility they are saying is remote because of the variety of hindrances that are likely to intervene and make the balance among all these factors difficult. So knife edge balance इसीलिए बहुत difficult है क्योंकि there are other factors which are also responsible in affecting these growth rates. As such, there is a definite possibility of inequality between GN and GW. So equality की बात ही नहीं हो सकती है. There is a definite possibility that GN may not be equal to GW because there are different factors that are affecting these growth rates. So if G exceeds GW, then G would also exceed. If GN exceeds GW, then G will also exceed GW. ये आपके डायग्राम में एक्चुअली दिखा रहे हैं. If GN exceeds GW, ऊपर बना हुआ है GN सबसे, then in that case G would also exceed GW. G would also exceed GW. G would also exceed GW for most of the time. So, जब natural growth rate actual growth rate से भी ज़्यादा है, warranted growth rate से भी ज़्यादा है, तो ये इस condition में there will be a bliss in terms of full employment in the economy. So this tendency in the economy leads to cumulative boom and full employment. Leads to cumulative boom and full employment. Leads to cumulative boom and full employment. So this is what this diagram is all about. When Gn is greater than G and GW, it will lead to full employment and there will be a cumulative boom in the economy. Because there is a full employment and people cumulative boom, people will have a lot of money in their hands. So cash बढ़ जाएगा ऐसी situation में. That is why such a situation will create an inflationary trend. You can change the slide. After this. Next slide. Such a situation, as you can see, will create an inflationary trend. To check this trend, a saving becomes desirable because these would enable the economy to have a high level of employment without inflationary pressure. So spending might create an inflationary trend because people are actually demanding more. And if on the other hand, so ये situation जहाँ GN is greater than GW and G दोनों, तो उस situation में ये बहुत inflationary situation होगी. It will be a full employment boom, but it will be inflationary in nature. So ये आपके नेट के क्वेश्चन हैं, ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं नेट में. यही इसी तरीके के क्वेश्चन हैं. When G is greater than GW, then what situation occurs? When G is greater than Gn, what situation occurs? Or when Gn is greater than G, then what situation occurs? So, if on the other hand GW exceeds Gn, G must be below Gn. I think you'll be able to see it in the next slide. See, draw this diagram. In this case, GW Gn से भी नीचे है actual growth rate. So, इसको बना लीजिए.
actual growth rate, और उसमें लिखा भी है there is a growth of unused capacity of capital and employment continue to fall. So when GW exceeds or GN is greater than GW, uh, there is a growth of unused capacity. This situation, ये जो diagram है आपके सामने, this situation will lead to unemployment, recession and unemployment. Recession and unemployment. It's very simple. Warranted और potential सब ज़्यादा हुआ जा रहा है, actual growth rate है नहीं उतनी, वो सबसे नीचे है. जो reality में actually में है growth rate, potential भी ज़्यादा, natural भी ज़्यादा. आपको actually में ध्यान देना है. You are supposed to pay attention to where is G. Where is G lying in this diagram? If G सबसे lower है तो आपका automatically recession है. If G जिससे भी ऊपर है तो automatically it will spell boom for the economy. But then on the other hand, because of continuous demand, that will be inflationary in nature. So you have to keep both the things in mind. What is happening with the G, and what is the interpretation you will have once you will see G in relation with GN and GW. Next slide. You can draw this if you want to. Don't change, first draw. I will come back to Domer model later on. First draw this diagram. So this is the second diagram which you are drawing in the series. In this, GW is greater than G. Okay. बन जाए तो बता दीजिएगा. ओके. आप लोग सबके होपफुली बन गया होगा, बाकी सबने बना लिया, संस्कृति सिंह बन गया. ओके, ठीक. So ये दो diagrams में, that's what I'm saying. Just keep an eye on where the G is lying. G is the deciding factor. Now, before moving ahead, the next slide, I will start talking about Domer model, because Harrod model is all about these three growth rates. Domer model is more on the demand side, as I said earlier. In a Domer model, the main growth model of Domer, bears a certain resemblance to the model of Harrod. In fact, Harrod regarded Domer's formulation as a discovery of his own version after a gap of 7 years. So, Domer gave this theory after the gap of 7 years of Harrod giving that theory. Domer's theory was just an extension of Keynes' general theory, particularly on two counts. So, this is a short answer. If somebody in a competition, it can be asked that the Domer theory was an extension of which economic theory? Then in that case, it was an extension of Keynes' general theory of income. Keynes' general theory of income particularly talks about two things which was mentioned in Domer's model also. First was investment has two effects. We have been talking about this a lot, the dual role of investment. So the same thing is mentioned over here. Investment has two effects: an income generating effect on the one hand, and productivity effect by creating capacity. So dual role चलता है investment का. एक तरफ income generating factors it creates, and on the other side it is actually increasing the capacity. The short run analysis governed by the Keynes ignored the second effect. Keynesian economics actually was only income bent economics, and he talks about income, from where do you get your income and how you spend it, and what is APC, what is propensity to consume. He was more from the demand side guy. So productivity effect by creating capacity is more on the supply side. So hence in the short run analysis, Keynes ignored the second effect. Keynesian economics is the short run economics, and the productivity, there was one more factor also responsible for that.
Income generating effect and income generating factors do change in the short run, but the productivity factors that can affect productivity or effect by creating capacity do not change in the short run. That is why Keen just left the second part. That is the productivity effect by creating capacity. Next slide. अच्छा, पहला तो ये है कि इन्वेस्टमेंट हैज टू इफेक्ट्स, डोमर की थियरी, दो काउंट पे एज वी से, तो दोनों, एक तरफ इनकम जनरेशन, दूसरी तरफ प्रोडक्टिविटी जनरेशन. The second thing was that unemployment of labor generally attracts attention, and one feels sympathy for the jobless, but unemployment of capital attracts little attention. It should be understood that unemployment of capital inhibits investment and hence reduces income. Reduction of income brings about deficiency in demand and hence unemployment. Thus, the Keynesian concept of unemployment misses the root cause of the problem. Domer wanted to analyze the genesis of the unemployment in a wider sense. So that's the difference between a Keynesian and a Domer. This is an absolutely right statement made here that it is very important कि जितना joblessness होती है बहुत ज़्यादा attention attract करता है, but capital lying idle, jobless, unemployed, capital है उसका कोई use नहीं हो रहा, just lying useless. So it should be understood that the unemployment of capital inhibits investment and then it will reduce income. ठीक है, खाली पड़ा रहने दीजिए, then what will happen? Because you're not hiring labor for that, because you're not, manufacturing anything. So if the capital is lying, idle, then in that case, it will inhibit investment and, brings about deficiency. So hence reduces income of the people. So this is very obvious. A reduction of income brings about deficiency in demand and hence it will lead to unemployment. So that's what they are saying. They are saying people are very concerned about how to get income. कहाँ से मिलेगी, किधर से मिलेगी, source of income क्या होगी. Spending के लिए भी concerned रहते हैं, saving के लिए भी concerned रहते हैं. तो consumption, saving hand in hand चलता है with income. But what about the productive capacity? What about the optimal utilization of resources? What about the capital of your country should not, just sit idle? This all will create a deficiency in demand because the reduction, this will lead to reduction in income because it will hamper investment. So next slide will explain it to you this in more detail. Next slide. To understand the implication of the Domer model and should get familiar with the relation listed below. Please ये सब relations को equation form में लिखते चलिएगा साथ में, नहीं तो समझ में नहीं आएगा. First, income is determined by investment through multiplier. For simplicity, saving income ratio S is assumed constant. This implies that. तो पहली तो equation लिखिए, YT is equal to IT upon S. YT is equal to IT upon S, where Y is the output, I is the actual investment, and S is the saving income ratio. Saving income ratio मतलब saving propensity, and T shows the time period. कितने time period में actual investment and S is saving income ratio के बीच का जो relation है वो कैसे काम करता है? What is the relation? This is the relation. YT is equal to IT upon S. And as I said, T is time. So first, defined by investment to multiplier. So for this is for simplicity's sake that they have taken saving income ratio as constant. But then income is determined by investment. इसको दिमाग में रखिए इस पॉइंट को. इनकम इज डिटरमाइंड बाय इन्वेस्टमेंट. बार बार लर्न करिए. इनकम का डिटर्मिनेशन सबसे बड़ा है इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट पॉइंट. इन द नेक्स्ट स्लाइड यू विल सी प्रोडक्शन कैपेसिटी वाला. तो एक तो उसने इनकम का साइड एक्सप्लेन कर दिया, YT इज इक्वल टू IT अपॉन S करके. फिर दूसरा साइड भी था इन्वेस्टमेंट का, प्रोडक्शन कैपेसिटी क्रिएट करने का.
So production capacity is created by investment to the extent of the potential average productivity of investment denoted by A. For simplicity, this is also assumed to be constant. In notation form, the relation can be written as, write the relation, yt minus 1, yani ki previous period is equal to what they have taken is investment in the subscript t divided by a actually is alpha, small alpha. Average productivity of investment denoted by A भी आप लिख सकते हैं. Although it's small alpha, it should be. So this is the relationship between the two relationships. आप इन equation को साथ में लिखिए. एक लिखिए yt is equal to it upon s और उसके नीचे इस equation को लिखिए yt minus 1 is equal to it upon alpha or a. Written? Have you written? Next slide. Okay. Now variables को बताया गया है. Y आपको पता ही output है या इस केस में productive capacity for output. A is the actual marginal capital output ratio. अगर ना पता हो तो लिख लीजिए actual marginal capital output ratio. कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट लगेगा, है नहीं. मार्जिनल कैपिटल आउटपुट रेशियो मतलब एडिशन जो हो रहा है कैपिटल आउटपुट रेशियो में. एक्चुअल मार्जिनल कैपिटल आउटपुट रेशियो which is the reciprocal of potential social average investment productivity, यानी अल्फा जो आप अपने सामने देख रही हैं is equal to 1 upon sigma. And sigma is potential social average investment productivity. ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है. ये तीसरी इक्वेशन है आपकी, समझिए. Alpha is equal to 1 upon sigma. What they will do, they will try to substitute it because उनको factors दिखाने होते हैं. कौन से factors किसको determine करते हैं. तो इसलिए delta yt is equal to they took sigma it. This equation shows that the change in productive capacity is the product of capital productivity and investment. As such, it reveals the productivity effect. Very important line, लिख लीजिए. Delta yt is equal to sigma it. This equation shows that the change in productive capacity is the product of capital productivity. Capital productivity का sign दिया हुआ and investment. As such, it reveals the productivity effect. This is what is missing in India's economy. Now, the change in productive capacity is the product of capital productivity. So, capital productivity बढ़ेगी कैसे? तो हर एक चीज इनपुट की प्रोडक्टिविटी बढ़ती कैसे है. लेबर की प्रोडक्टिविटी इंसेंटिव से बढ़ेगी. वर्किंग आवर लेस करिए, प्रेशर कम दीजिए, वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा करिए, the person's productivity increases. But if the person is getting humiliated every day and is getting robbed of, as I was talking about, his dignity, then in that case what if the bosses are in a in a loss, at a loss, because they themselves are reducing the productivity of a person. The productivity of a labor or a person concerned is only increased in one way. In fact, there are two ways. A, you have to give the incentive to a person, and B, there are working hours. There are other perks involved in that. So, productive capacity of labor, ऐसे ही productive capacity of capital. And how do you increase that? Through investment, through technological change, and that's where the technology comes in. So अगर आपने TV black and white देखा है, तो productive capacity of that particular TV was not that much जो कि आज है आपके पास. तो वो चीज investment और R&D ने possible किया. तो जो प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होता है उसके लिए इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसलिए ड्यूल रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट में एक तरफ इनकम एंड दूसरी तरफ प्रोडक्टिविटी क्रिएशन है. इन्वेस्टमेंट ही एक चीज है जो इस प्रोडक्टिविटी क्रिएशन को कर सकता है. सो इन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग इन प्रॉफिट इज इम्पोर्टेंट हियर. नेक्स्ट स्लाइड. although much is written over here, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है.
Okay. Uh, Investment is induced by output growth along में ये तीसरा है. एक तो इनकम लिख लीजिए, दूसरा प्रोडक्टिव कैपेसिटी, तीसरा है इन्वेस्टमेंट. Investment is induced by output growth along with entrepreneurial confidence. तो देखिए वो क्योंकि वो खुद reinvest करता है ना प्रॉफिट को अपने, वही रिस्क लेता है entrepreneur. So entrepreneur confidence के लिए जरूरी है that there has to be a positive output growth. The later is adversely affected by junking, which means the ultimately untimely loss of capital value due to the unprofitable operation of older facility. This may be due to the shortage of labor or invention of new products or labor saving inventions. This assumption can be shown by the relation. Before going to the relation, I would like to discuss this thing. The later is adversely affected by junking, which means untimely loss of a capital value due to the unprofitable operation of older facility. Now, कई बार ऐसा होता है कि फैसिलिटी लगी हुई है, पूरा प्लांट है, बट द प्लांट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डेप्रिसिएशन कॉस्ट. सो वो क्या होता है कि वियर एंड टियर उतना ज्यादा हो चुका होता है, ultimately it leads to the loss of the capital value. Or thousands of mills which are lying here in India are closed down because of the lack of money and this um, उसको हम रीअसेस करते, उसको फिर से रीस्टार्ट करते, ऐसा हुआ ही नहीं. सो जंक एंड जंक ऑफ, दैट्स व्हाई द वर्ड जंकिंग, junk and junk of the capital machinery is lying around and is of no use anymore. So this relationship is where G is an increasing function of the rate of output acceleration, but a decreasing function of the junking ratio. Of course, growth rate is an increasing function of the rate of output acceleration. Can anybody tell me what does the word acceleration means? What does the word acceleration means? Nobody knows what does acceleration means. Are you looking up? Seriously? Ma'am, growth that increases at a हाँ बेटा, growth increases at a ma'am, some that grows at an increasing rate. okay, acceleration. Acceleration is also used in physics. Not the term is not only used in economics, but it is basically a term used in physics also. Acceleration. There are two types of a terms that is actually used in economics. In what you can say, they complement each other. The one is multiplier. The another one is acceleration. Multiplier is basically a demand side theory which was given by Keynes, which stated that the multiple times investment or delta I will lead to multiple times increase in income. So that was the K, the property of K, that is multiplier. And acceleration actually it means the rate of a change. This is what it means in physics, the acceleration. When we talk about acceleration in economics, it means it's the rate of a change. We are talking about some kind of velocity change of an object with respect to time. That's what acceleration actually means. But here, acceleration in economics मीन्स द किस स्पीड से आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है. सो एक्सेलरेशन इसलिए मल्टीप्लायर की तो डेफिनेशन है 1/1 माइनस एमपीसी, but acceleration accelerator theory is such theory which talks about postulation whereby investment expenditure increases when either demand or income increases. So the accelerator theory posed that companies typically choose to increase production, thereby increasing profit to meet their fixed capital to output ratio. So basically acceleration means economy को इतना accelerate कर दीजिए, इतना heavy investment करिए कि economy में money flow हो. And in that way, it will result either in increase in a demand or income increases. So this is known as acceleration in economics. So the term which is used over here is acceleration. So investment
is induced by output growth, as it's written over here, and all that. But where G is increasing function of the rate of output acceleration, but a decreasing function of the junking ratio. तो जितना आउटपुट एक्सेलरेशन होगा, जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट पंपिंग होगी, उतना ज्यादा एक्चुअल ग्रोथ रेट बढ़ेगी. But a decreasing function of the junking ratio which is shown by D into T. Now this is T is simply your time period. Yeah, and so junking ratio means आपने अगर it's a decreasing function, अगर वो कैपिटल छोड़ दिया, उसको यूज नहीं किया फर्दर इन्वेस्टमेंट से, तो वो तो पड़ा रहेगा. So junking is inversely proportional. G is से जो directly proportional है वो है accelerator या investment. If junking ratio is zero, then the investment increases at the same rate as output. So fourth is employment depends upon the utilization ratio. So we have talked about three things actually. The first one was the income generation. The second is the productive capacity. The third is the investment induced by output growth along with entrepreneurial confidence and all that, and junking. Then fourth is employment depends upon the utilization ratio. This is expressed as the ratio between actual output and productive capacity. इसका next slide में देखिए. नेक्स्ट स्लाइड देखिए, इसको लिख लीजिए अगर क्लियर हो रही हो तो. दिस इज NT अपॉन IT. बार लगी हुई है इसमें. H से मल्टीप्लाई किया गया है, and H in this case is greater than 0. This is the relationship they are saying, जो कि employment और productive capacity के relationship को आपको बताए. यहाँ पे आपको जो ऊपर दिख रहा है वो YA है, उसको YA लिख लीजिएगा, नीचे YS है. So in the next slide you will see what these variables stands for. If you have written, yes, A refers to employment, L to the labor force, parallel lines is the employment coefficient, YD is the actual output and the productive capacity, I being the time period. This equation explains that the ratio of employment to labor force is determined by employment coefficient and the ratio of output to productivity. The dots are meant to indicate the existence of other determinants of the employment ratio. If we assume that the employment coefficient takes the maximum value of unity, then YDT is equal to YST. Very simple equation. It's saying, see that there is a relationship between employment, output and productive capacity. The more employment actual output होगा, उतनी ज़्यादा productive capacity बढ़ेगी, जितनी productive capacity बढ़ेगी. So there is I'll explain it to you in a different light also. इसको ऐसे explain करते हैं. Productive capacity can be defined as the capacity of, let's say, labor to work, and जितना वो work कर रहा है and how much output it gives. What happens when there is an increase in the productive capacity of labor? Will it increase in more employment or will it increase to unemployment? If there is increase in the productive capacity of already existing labor force or workforce, what will happen? Will it lead to employment or will it lead to unemployment? Simple question है यार. What happens? Ma'am, unemployment. It will lead to unemployment. Yes, because already अगर 4 लोग काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे, 4 लोग समझिए मैनुअली काम कर रहे थे, चलिए बैंकिंग ले लेते हैं, रेलवेज में भी हुआ है ये चीज. और जब 80s में कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया गया, उन 4 लोगों की फिर जरूरत नहीं थी. हुआ क्या कि वो एक आदमी 4 लोगों का काम करता था. कैसे, क्यों हुआ ये, क्या चीज बदली? What was the change? What was the change? What changed?
Ma'am, technology upgradation. Technology was introduced. The technology is a solo residual. यही तो है टेक्नोलॉजी, ये करती है टेक्नोलॉजी, increases the productive capacity. अब प्रॉब्लम ये होती है कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ना मतलब आउटपुट बढ़ेगा, हाँ आंसर इज यस, बट अगर एक आदमी 4 लोगों का काम कर रहा है तो वो 3 अनएम्प्लॉयड होंगे. सो सर्विसेज सेक्टर का यही आंसर है दैट व्हाई डिस्पाइट सच अ हाई परसेंटेज ग्रोथ इन जीडीपी इट कैन नॉट अब्सॉर्ब सो मच लेबर. द आंसर लाइज इन कि सर्विसेज सेक्टर की जो लेबर है उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, because it is such a capital intensive sector, it is so much technology prone sector, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेक्टर, कि उसको तो आप डू अवे कर ही नहीं सकते हैं सर्विसेज सेक्टर में. क्या आप टूरिज्म, क्या होटल रेस्टोरेंट्स ले लीजिए, कहीं भी आप चले जाइए, कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन, एजुकेशन, हेल्थ, हर जगह टेक्नोलॉजी है सीप इन. तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ गई, लेबर की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ गई तो हायरिंग कम होगी. तो सेक्टर जहाँ पे जो आपकी इकोनॉमी जिस पे डिपेंडेंट है वो अनफॉर्चुनेटली इतना एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है लेबर. सो अनएम्प्लॉयमेंट इज द रियलिटी. It's not a BJP government or the Congress government. It's the wrong policies which they don't realize, or even if they realize, they think लोगों को क्या समझ में आएगा. But anyway, productive capacity lies not in services sector, neither in agricultural sector, because agricultural sector fixed factor के साथ जुड़ा हुआ, which is land. आप कितनी लेबर उसमें वेरिएबल लगा देंगे. तो अब कहाँ, where is the hope of employment? The hope of employment lies with the manufacturing sector, बीच वाला, the industry, the small scale, ranging from small scale to the large. It depends. Medium sector, MMSE. अब मीडियम सेक्टर्स को इंकरेज करना होगा जो एब्जॉर्ब करेगी. तो बहुत वहां भी वही लिखा है कि इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लिखा हुआ एम्प्लॉयमेंट का सीधा रिलेशन होता है आउटपुट ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी. नेक्स्ट स्लाइड. अच्छा, इस स्लाइड में लिखा ये है, पास्ट एज वेल एज प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट कैन जनरेट प्रोडक्शन कैपेसिटी एट अ गिवन रेशियो. देखिए, 2 तरीके के कैपिटल भी हैं आपके पास, ये भी समझ लीजिए. इन्वेस्टमेंट तो पास्ट और प्रेजेंट का हो गया. 2 तरीके का कैपिटल होता है और 2 ही तरीके का इन्वेस्टमेंट भी होता है. कैपिटल का मतलब एक विंटेज कैपिटल, एक नया कैपिटल. दूसरी चीज, एक पास्ट कैपिटल और एक प्रेजेंट, पास्ट इन्वेस्टमेंट और एक प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट. पास्ट इन्वेस्टमेंट उसको इन्वेस्टमेंट को कहते हैं जिसका जेस्टेशन पीरियड बहुत ज्यादा होता है. आपने बना दिया डैम, आपने डैम भाखड़ा नंगल शुरू किया 74 में. Do you know how many years it took for Bhakra Nangal to actually become completely operational? Anybody has an idea? Anybody has an idea Bhakra Nangal कब शुरू हुआ था और कब खत्म हुआ? It was one of its kind investment India made. Billions and billions of rupee was pushed into it, and yes, anybody has an idea how much time it took? I'll tell you. It's a very interesting story regarding DE के बच्चों को जरूर पता होनी चाहिए. The agreement was signed in 1944 to build a dam. ठीक है? Before independence. With Raja of Bilaspur, there was a तब वो थे provinces थे, तो वो उनसे साइन किया गया. प्रोजेक्ट प्लान था 1945 में शुरू करने का. ठीक है, सब शुरू हुआ. And it was completed in early 1970s. 45 लगा लीजिए, और अर्ली 70s में कंप्लीट हुआ. कितने साल लगे? How many years? सिंपल है यार, एग्जैक्ट ना बताओ, ऐसे ही बता दो.
How many years? Yes, 25 to 30 years. अब आप समझिए इसका जेस्टेशन पीरियड सोचिए, इसमें क्या हुआ इस दौरान। जो कॉस्ट थी, जो इनिशियल कॉस्ट थी, आई टेल यू, वो मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो गई because of this 30-year odd period, 25 to 30-year odd period that was between that thing. This is known as uh, gestation period. And gestation periods are nothing but the lags that generally, इसीलिए कहा जाता है कि सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट जब बोलते हैं तो कहते हैं कि इसमें गैप होता है। सेविंग हमेशा इन्वेस्टमेंट में तुरंत नहीं तब्दील हो जाएगी, उसमें जेस्टेशन लगता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने में, इरिगेशन करने में, क्योंकि इट इज अ मल्टीपर्पज डैम, तो उसको कई कई फंक्शन करता है वो। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी है, इरिगेशन भी है, फिशिंग भी है, उसमें बहुत बड़ा एक उसका खुद का पॉन्ड है, गोविंद सागर पॉन्ड। तो एनीवे खुद की लेक है उसकी, तो इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, बट देन अगेन 30 इयर्स। तो ये है प्रॉब्लम इंडिया में। द प्रॉब्लम इज द जेस्टेशन पीरियड। तो जो यहाँ लिखा है, the past as well as the present investment can generate productive capacity at a given ratio, but due to managerial miscalculation, the new investment project will cause untimely demise of old project and plans. So managerial mismanagement और managerial miscalculations होते हैं। 20 साल में हम बना लेंगे जी, अच्छा बना लेंगे। तो फिर देखिए, मैं इसके अलावा आपको और एक एग्जांपल देती हूँ। भाखड़ा नंगल के अलावा देयर इज वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल। अर्जुन टैंक आप सबने सुना होगा। हैव यू हर्ड अबाउट इट? नाम सुना है? सुना है अर्जुन टैंक का नाम सुना है कि नहीं? हैव यू हर्ड अबाउट अर्जुन टैंक इन इंडिया? इंडियन डिफेंस आर्मी में है ना? ओके गुड। अर्जुन अर्जुन टैंक का जो आइडिया था, इट वाज एक्चुअली डीआरडीओ ने पहले इसको प्रपोज किया था 72 में, 1972 में। इंदिरा गांधी वाज द वन हु सेड दैट सी we have a lot of aggressors surrounding us, so we need a MBT. MBT का मतलब होता है मेन बैटल टैंक। इंडिया के पास खुद का नहीं था। इंडिया के पास T-75 और रशियन बेसिकली बेस था, वो आज भी है T-90, बट स्टिल इंडिया वांटेड टू प्रोड्यूस समथिंग ऑफ इट्स ओन, जिसको MBT कहा जाता है, मेन बैटल टैंक जो होगा। आप लोग चाहें तो MBT के फीचर्स पढ़िएगा क्या होते हैं। एनीवे 70s में शुरू किया था प्रोजेक्ट, and it was in 72, and it was in 1996 that the Indian government decided to mass produce the tank. कितने साल हुए? कितने साल हुए 72 से 96? Thank you. So now you can see, you can understand the gestation periods are something that is a dampened to the, even आपको पैसा मिल भी जाए आपकी कंट्री को, आपकी कंट्री को बिलियन एंड बिलियन ऑफ डॉलर्स दिए जाते हैं एड में, द प्रॉब्लम इज कि उसका इफेक्टिव नेस खत्म हो जाएगी अगर उसकी कॉस्ट मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो गई, उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी तक लाते लाते। ये तो अभी 2 एग्जांपल मैंने दिए हैं। अगर आप लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का हाल पढ़ेंगे तो इट विल बी सरप्राइजिंग। 40-40 साल में बने हैं। देयर आर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो हमारे पास है, वो करीब है 18, और उसमें से जो हम उसको प्रोडक्टिव कैपेसिटी उसके फाइनल तक लाते लाते इट टुक 30-40 years. So managerial miscalculations, managerial politics, wrong policies, ये सब इस चीज को वो करता है। तो इफ जंकिंग एग्जिस्ट इट वुड, और दूसरी चीज है जंकिंग तो हो ही जाएगी। जो कैपिटल लगा है वो देखिए आप 25-25 साल 30 साल पहले मशीनरी खरीदी जा रही होगी, वो कैसे उसको, उसकी रिलायबिलिटी क्या रहेगी, उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या रहेगी। सो दैट इज द प्रॉब्लम, द लूप होल लाइज देयर।
अब आपने अपने सामने विटनेस किया है, दोज पीपल हु लिव इन लखनऊ, आप सबने एक चीज विटनेस की है, मेट्रो का एग्जिस्टेंस। एलएमआरसी ने उसको अप्रोक्सीमेटली कितने टाइम में बना दिया? जस्ट गेस लीजिए। एलएमआरसी ने कितने टाइम में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया लखनऊ में? हाँ, एब्सोल्युटली 3 to 4 years। सो अब 25 साल तो नहीं लगे ना, 3 to 4 years। और कितना इफेक्टिवली काम हुआ। अब क्यों ऐसा हुआ बताइए? एलएमआरसी क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, उसका अपना प्रॉफिट है, उसकी अपनी टाइम ड्यूरेशन है, उसकी अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, वो इस सब चीजों से चलते हैं। डीआरडीओ जो कि एनबीटी बना रहा था वो गवर्नमेंट है। भाखड़ा नंगल में जो लोग इन्वॉल्व थे, द गवर्नमेंट एंड द एजेंसीज, गवर्नमेंट है। और दैट इज व्हाई द पब्लिक सेक्टर लैग्स बिहाइंड इन इंडिया। पब्लिक सेक्टर वैसे काम नहीं करता है जैसे प्राइवेट सेक्टर करता है। तो जेस्टेशन पीरियड इसलिए इतने इतने बड़े बड़े हैं कि लोगों को पता ही नहीं है कि बिलियन ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स के डॉलर्स, इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट रुपीस एनीमोर, हैव बीन फ्लश्ड इनटू दीस प्रोजेक्ट्स। और कुछ तो शेल्व कर दिए गए इतने समय के बाद, बने नहीं, ठीक नहीं से बने। देयर आर मल्टीपल फेलियर्स, सो दिस कैलकुलेशंस कैन बी हेवी ऑन द इकोनॉमी आल्सो। एलएमआरसी ने ना सिर्फ चलना शुरू कर दिया, बट एलएमआरसी ने प्रॉफिट में भी जाना शुरू कर दिया। सो प्रॉफिट उसको चाहिए बिकॉज इट इज यू नो, उसने कॉस्ट लगाई हुई है उसमें। सो ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोग जो पढ़ेंगे तो इससे ये क्लियर होगा कि एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्टिव कैपेसिटी का एक रिलेशन है। आप अगर लेबर को खाली छोड़ देंगे और उसमें इन्हेंसमेंट नहीं करेंगे किसी भी लेवल पे, एजुकेशन से करिए, स्किल से करिए, डजंट मैटर, तो होगा क्या कि एक पर्टिकुलर लेवल तक वो वेस्टेज हो जाएगी, ह्यूमन कैपिटल वेस्टेज। कैपिटल को अगर आप डेप्रिसिएशन कॉस्ट नहीं देंगे, मेंटेनेंस नहीं करेंगे, तो उस लेवल पे वेस्टेज हो जाएगी, जो कि बहुत होती है इंडिया में। दैट इज द प्रॉब्लम। अब तीसरी चीज रह गई कि आप बेसिकली इसको अगर दोनों काम नहीं कर पा रहे हैं तो व्हाट यू शुड डू, यू शुड इंपोर्ट देन। तो वो चीज बनाने की कोशिश क्यों करेंगे आप जो कि एक्चुअली में बहुत सस्ते दाम से बाहर से इंपोर्ट हो सकती है, जबकि आप अपने यहाँ मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट चला रहे हैं। अब दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रडिक्टरी पॉलिसी टू द गवर्नमेंट, बट थिंक अबाउट इट, मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया का मतलब यही है ना, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ट्राई टू मेक in India, but there are some of the things that are way cheaper if you will import. So this is these are the policy matters, these are the policy miscalculations. I'll take up one more point of a DOMER, then we will end this class. इसमें नीचे लिखा है, this assumption is considered the central theme of DOMER's model. In the form of a notation, it can be expressed as where K is capital shows investment DT and multiplied by KT is the amount of capital junked and DT is the junking ratio. DOMER viewed growth from the demand as well as the supply side. इसको हाँ ये चीज important है। DOMER viewed growth from both the sides. Harrod only viewed it from the supply side. इसमें demand side भी लिया गया था। तो वो ड्यूल रोल इसीलिए लिखा हुआ है उसका। इन्वेस्टमेंट ऑन द वन साइड इंक्रीजेस प्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड ऑन द अदर जनरेट्स इनकम। बैलेंसिंग ऑफ द टू साइड्स प्रोवाइड्स द सॉल्यूशन फॉर स्टेडी ग्रोथ। ये सारे सिंबल्स यूज हुए हैं, वाई डी, वाई एस, के एंड आई। इनको लिख लीजिएगा, स्लाइड लिखिएगा तभी आगे डोमर आपको समझ में आएगा। ये व्हाट डू these symbols, you know, symbol stands for. YD is a very simple term. It's a demand side income and a level of net national income or level of effective demand at full employment. दो चार चीजें लिख लीजिए। इफेक्टिव डिमांड क्या होती है, एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, इफेक्टिव डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, what is the difference between the two? K लिखा हुआ है, not only capital, it's written real capital. What is the difference between capital and real capital?
This we'll take up in the next class. Okay, in half an hour. In fact, I think Kajal have already told to the head board to join within 15 minutes. So you guys can take a break.